डायरेक्टर्स प्लेलिस्ट के राजू हिरानी वाले पिछले 2 वीडियोस में हमने ये देखा कि कैसे उनकी लाइफ ने उन्हें अपने तरह की फिल्में बनाने के लिए इंस्पायर किया। इस वीडियो में हम राजू हिरानी की एडिटिंग, राइटिंग और एडवर्ड से मिली टेक्निक्स को एनालाइज करके ये समझेंगे कि वो इतनी अमेजिंग फिल्में कैसे बनाते हैं। पहले राजू हिरानी का प्लान डायरेक्शन कोर्स में अप्लाई करने का ही था, बट फिर किसी ने उनसे कहा कि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें एडिटिंग कोर्स में अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे तैसे कैंपस में घुसने के लिए उन्होंने एडिटिंग में ही अप्लाई कर लिया। I don't think anybody really chooses to be an editor. You know, sitting in Nagpur, I didn't even know what editing was. So I wanted to be a director, and that's the reason I wanted to go to the film school. फिर मैंने अप्लाई किया फिल्म इंस्टीट्यूट में डायरेक्शन में, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ वहाँ पे भी। We have very few film schools in India till date, and that time there were fewer. अच्छा। हाँ, क्योंकि फिर मुझे किसी ने कहा यार डायरेक्शन में 8 सीट होती है और वो 8000 लोग अप्लाई करते हैं। एडिटिंग में अप्लाई करो, वहाँ पे भी 8 सीट होती है, मगर वहाँ कम लोग अप्लाई करते हैं। I asked him what is editing. He said, you get into the institute, you know, then you'll figure out editing, figure out direction, everything. तो मैंने एडिटिंग में अप्लाई किया नेक्स्ट ईयर और वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। कैंपस से निकलने के बाद उन्होंने इवेंचुअली अपनी फिल्म खुद लिखने, एडिट और डायरेक्ट करने का डिसाइड किया। इस तरह अपनी फिल्में बनाते वक्त वो फिल्म मेकिंग के तीनों स्टेजेस में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार खुद अपने सीन से बोर हो जाते हैं। मैं शुरू करता हूँ तो इसलिए शुरू करता हूँ कि मुझे अच्छी लगती है, जब वो खत्म हो जाती है तो मुझे मेरी कोई फिल्म जेन्युइनली कह रहा हूँ मैं, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती जितना दूसरों को लगती है। See, at that stage what happens is you write the film. Basically, because you're writing the film, you go through hundreds of drafts of that film writing. You're shooting the film, like 100-day shoot. You're also editing the film. You spend a chunk of time writing, then you're shooting, then you're editing. In the editing, seeing it like hundreds of times. मैं काउंट करूँ तो शायद 1000-1500 बार देख चुका होता हूँ। फिर डबिंग में बैठता हूँ खुद में, फिर बैकग्राउंड में भी हम लोग बैठ के। So that material becomes dated for you. The jokes which made you laugh stop working by the time you reach the end. Because what happens, you're living with the same joke while writing. You're living with the same jokes while rehearsing with actors, while shooting, while editing. So that joke stops working for you. You're not getting emotional as when you first time while writing it happened. When you wrote an emotional scene, first time when you wrote, you cried. लिखते वक्त उस समय आए होते हैं. You don't cry anymore while you're editing. तो मैं थोड़ा फिर उस time you kind of you just don't know. थोड़ा nervous हो जाता हूँ. हाँ, you have to depend on somebody else's judgment. I do actually a lot of test screens to get a reaction. If consistently there's a problem being pointed out, then that means maybe there's a problem. So address it. But तीनों processes में उनका favorite part editing है. If I have to choose between the 3 aspects of filmmaking, I enjoy editing the most. There are no dark days in that. There are no dealing with 500 people on the set. Nobody is bothering you. There are no 200 people like on a shoot. Editing is when you sit alone. I lock the room. It's in a basement, and you can see now you're finally your film emerging. I'm sitting by myself and seeing the film emerge. So that's very meditative for me. Whenever I try to do meditation, otherwise I can't focus. But when I'm editing, I'm 3 महीने बिल्कुल literally बस खाना खाने के लिए निकलता हूँ, सोने के लिए 3 घंटे निकलता हूँ और really get lost in that world and I enjoy the process. Editing something I really enjoy. अगर तुम लोग को एडिटिंग की इंपॉर्टेंस का उतना अंदाजा ना हो रहा हो तो राजू हिरानी का अल्टीमेट ज्ञान सुनो। I've been an editor all my life. I started my life as an editor and then started making my films and I still edit my films. So editing टेबल को मैं एक बहुत ही अहम हिस्सा समझता हूँ फिल्म मेकिंग का। And it's not because that I've been an editor, but I completely agree with you when you say that editors are unsung heroes. जो मुझे लगता है जिसको इतनी अहमियत नहीं दी गई है हमारी इंडस्ट्री में। It's never got its due. लोगों ने समझा ही नहीं है कि एडिटिंग से क्या किया जा सकता है। I think we need to give it its proper due. Every other person's work in cinema you can judge. A good camera work can be judged. You know, good production design can be judged. But how do you judge the work of an editor? You don't know what the kind of material he got. You don't know whether he saved the film or it was shot so badly that he couldn't save the film. You know, if a film is working very well, the credit can always be taken by the director saying, "Aare yaar, usne, you know, he shot it well. What lovely shots!" And if it's not working very well, also the blame can go on to the director. Partly to the director, partly to the editor. But there's nothing by which you can really judge an editor's work. You know, actually, an editor is a writer. He is the next writer. Quote hai, film is made on 2 tables, writing table and editing table. Like one kind of writing happens on the writing desk, second writing happens on the editing table. You know, people mostly think that what is an editor doing? A director shoots, an editor comes in and joins 2 shots and it's done. No, it's not as simple as that. Because you have 10,000 shots in the film and it's the juxtaposition of which completely changes the meaning, completely changes the layer of emotions. Okay, this is passionate for me. So let me tell you a little bit of the history of how editing came into being. Earlier when cinema started, silent cinema, even before Chaplin, what were they doing? The camera was
on a tripod at one place. It was shooting an event from one angle. It's how when you sit in a theater, when you're watching a play, you're sitting in one seat, and from that angle, whatever you see of the play is that one lens you're watching it from. Unlike a camera, you're not going ahead, you're not catching the close-up of a person, seeing his expression. No. Every film in that period, in silent cinema period, was shot like a single shot. Nobody knew what editing was. Till, I think it was Griffith who shot the first close-up. He actually reached out to an actor's face to show what was happening on his face, catch his expressions. Then there was this man called Edwin Porter, who was once sitting with these rushes in the editing room where they would shoot events. So there was some silent film made about a fire in one place, how these firemen are leaving to rescue the people there. So there were two shots. One was this fireman walking, rushing down the poles. They're coming down. And then it was supposed to cut to a next scene where there's this fire and people are struggling in the fire and these firemen come and save them. Now imagine if it is cut like these two shots, what is an impression you get? The impression you get, okay, there was a fire, these people came and saved them. I think it was an assistant editor, Edwin Porter, who was sitting with this material, and what he did, he cut it like he showed one shot of this fireman coming down. He cut it in between, and then he cut to these people struggling in the fire. Then he cut back to these more firemen leaving. He cut back to these people struggling in the fire. He cut back to more people leaving, and then he showed those people arriving there and saving those people. So what this did was created an extra element of anxiety. It created an emotion for the viewer that, oh God, will they be able to save these people or no? So that emotion didn't exist. It was just by editing the same two shots, he was able to create an emotion of anxiety within a viewer. So in cinema, that's exactly what we're constantly looking for. You're constantly looking for to create an emotion. So you hide certain things, you hold on to certain things, you give the viewers certain things to see early. So editing is all about trying to create that emotion. And finally, it's about shots. Everything is a separate shot. So like, okay, this camera is taking two shots, that camera is taking this shot. In the hands of an editor, when you have 10,000 shots or 2,000 shots or whatever, तो जरूरी नहीं है कि जिस ढंग से डायरेक्टर ने शूट किया उसी ढंग से वो शॉट वही मीनिंग करना है. कई बार आप उसको इंप्रूव करते हो. How much to use from there, how much to use from here, when to use, not to use, how much to tell an audience, how much to hold back. कई बार आप उसका मीनिंग भी completely change कर सकते हो एडिटिंग में. We've done experiments like this. Very basic example. Just famous editing का एक example है. If you have three shots, shot of a man smiling, the same man looking scared. Third shot, take another person, shot of another man pointing a gun. And now with these three shots, cut it in two different ways. If I was to put the shot of a smiling man, cut to the man, second shot, man picking up the gun, go to the same man and he gets scared. The impression you will create is, this man was smiling, he saw a gun, he got scared. Now just reverse the first and third shot. So you have a shot of a man, gun comes up, he smiles. So suddenly he's a courageous man. They're exactly the same shots. You try it out, no expression changes, meaning changes. I have done it all my life. काफी हद तक वहाँ write की जाती है, rewrite की जाती है. It's rewriting actually. So the task of an editor is to make the film very seamless. राइटर ने जो कहानी लिखी है उसका काम है उस कहानी को बेस्ट वे में प्रेजेंट किया जाए, उसकी पेसिंग को ठीक रखा जाए, उसकी रिदम को ठीक रखा जाए. So communicate whatever has been written on the page to make sure that gets exactly translated like that and probably take it a few notches higher than that. और अगर एडिटर अच्छा है तो कई बार rewrite भी करता है कहानी को. He can improve the performances of actors, he'll change the pauses the actors gave, he'll pick up sound from one take, use the picture from another take. So much is possible. Editor can make it or break your film. An editor is actually a storyteller. And I wish editors got more credit for the work. अच्छा, राजू हिरानी की फिल्मों का एक भी सीन अगर टीवी पे देख लो तो पूरी फिल्म खत्म होने के पहले उठने का मन ही नहीं करता ना. एक्चुअली में ये चीज़ इस बात का प्रूफ है कि उनकी एडिटिंग कितनी क्रिस्प होती है. साले सेट मैक्स वालों ने तो एग्जाम के समय 3 इडियट्स दिखा के पता नहीं कितने नंबर कम कराए मेरे. So I am pretty conscious about my pace. I make sure that it's pretty fast because what's happened, cinema is a language. There's a grammar we've imbibed. We've imbibed as viewers, we've imbibed the grammar to watch films. And also what has happened, 100 days of cinema has happened actually already. That language is gradually evolving. The early part of cinema, just seeing a visual image was exciting. People could sit for hours and watch that image and wonder. Not anymore. So the capability of a viewer has changed because of television, because of music television, fast cuts. The child is born, he's already exposed to visuals. So he can imbibe things much faster. The attention span is very little, I feel. Earlier you needed a slower pace things to communicate things. Like if you sometimes you look back at some films as a kid which I would have enjoyed, now I can't watch them actually. And it's not that they're bad films, it's that the pacing is very different. Now they're imbibing faster and the patience level has gone down. They're flipping channels. That's true. Also people have become smarter in terms of understanding the grammar of cinema. They absorb very quickly. They're able to fill in the blanks and say, okay, this is what must have happened. So you have to keep them in that pace. So I think you have to move fast. राजू हिरानी का एक अच्छा एडिटर होना
उनके पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है। But I still think like an editor when I'm shooting. When I go to my shoot, When a scene is done, I can actually close my eyes and I can see the film. I'm actually seeing the film running in my head. I know Truck ऐसे long जाएगा ट्रैक होगा ऐसा. here I'm going to go close, here I'm going to go to shot. It flows like that. You completely see the film, so then you go and shoot that much. That's all you need. For the first 2 months, he didn't even allow me to see the film. He was sitting completely alone in isolation, and I see that it is a kind of a meditation for him, where he actually looks at the entire film he goes back probably to how he had first seen it and how to bring that vision here, because finally it's his vision, and he makes sure that he gets as close to his vision as possible before he opens it up, and then he's very open to suggestions. I would have never sitting in Nagpur understood what editing is. I was just thrown into an editing course, and then now I look back and say, hey, thank you. राजू हिरानी डायरेक्ट करते वक्त भी एडिटिंग वाले दिमाग से सोचते हैं। इसका प्रूफ हमें 3 इडियट्स के इस शॉट से मिल सकता है। नोटिस करो कि कैसे दोनों फैमिलीज के शॉट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, चाहे वो दोनों जगह एक एक आइटम का जमीन पे गिरना हो या दोनों पेरेंट्स का लेटर पढ़ के बाजू वाले मेंबर को थमाना। ऐसी सिमिलैरिटीज यही रिफ्लेक्ट करती हैं कि राजू हिरानी को शूट करते समय मालूम था कि वो इस शॉट को कैसे साइड बाय साइड एडिट करेंगे। इसके साथ साथ एडिटिंग के थ्रू कैसे एक कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करें, ये भी राजू हिरानी बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे को 3 इडियट्स मैं कभी नहीं भूलूंगा, जैसे उन्होंने एडिट किया था मैंने सोचा ही नहीं था। आप अगर नोटिस करेंगे चतुर का जो कैरेक्टर है ना, फर्स्ट हाफ में दैट प्रेजेंस इज वेरी वेरी मिनिमम। मगर अब इसका एक स्पीच है जो ये चेंज करते हैं, तो मुझे लग रहा था यार अगर आमिर जाके उसका स्पीच बदल देगा, ऐसा लगेगा यार क्यों इस बेचारे की आप बैंड बजा रहे हो, क्यों उसके पीछे पड़ा हो। तो इसका मतलब हमको थ्रू आउट द फिल्म इसको बिफोर वी रीच द स्पीच उसको विलेनिश बनाना पड़ेगा। तो वी हैड रिटन मेनी सीन्स कि एक सीन डाल देंगे इसका, पर फिर वो फिल्म टूट रहा था कि कभी बमन की बात कर रहे हैं, कभी इसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने वायर जा रही थी। ये वायर जा रही थी। तो फिर हमने ये किया कि जो एग्जिस्टिंग सीन्स हैं उसमें सिर्फ उसके रिएक्शंस लिए, कि जब आमिर कुछ करता है तो ये एक स्मर्क देता है, तो थ्रू दोस 4-5 सीन्स मशीन की बात करता है एक स्मर्क देता है, पेन बोल रहा है किसको पेन चाहिए तो पहले खड़ा हो जाता है मुझे चाहिए। तो हमने एक बिल्डअप कर दिया कि एक विदाउट एनीथिंग धीरे धीरे रिएक्शन शॉट कर करके, ताकि व्हेन यू रीच द स्पीच यू डोंट फील बैड दैट दे हैव चेंज्ड द स्पीच। ऐसे ही कई सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का आर्क राजू हिरानी बिना डायलॉग के सिर्फ रिएक्शंस के थ्रू दिखा देते हैं। जैसे पीके के क्लाइमैक्स में जग्गू के फादर का आर्क हम सिर्फ उनके रिएक्शंस देख के समझ जाते हैं। सिमिलरली लगे रहो के क्लाइमैक्स में भी लकी सिंह का आर्क सिर्फ उसके रिएक्शंस से कम्युनिकेट होता है। ये तो एडिटिंग की बात हो गई, अब आते हैं राइटिंग पे। जिसको भी राजू हिरानी का नाम मालूम है उसको पता है कि वो अपनी स्क्रिप्ट पे कितना काम करते हैं और उनके लिए स्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। For me, what is most important if I have to put it in words is scripting. मुंबई में ट्रेमर्स हुए थे अर्थक्वेक के, उनका जो स्क्रिप्ट था वो उनके लैपटॉप पे था। फिर जब पूरी दुनिया नीचे आ गई है बिल्डिंग छोड़ के, तब ये जनाब ऊपर भागते हैं अपना लैपटॉप लेने के लिए जिसके ऊपर वो स्क्रिप्ट है। तो ये जो स्क्रिप्ट की वैल्यू करते हैं वो अपनी जान से ज्यादा करते हैं। ऑल्दो राजू हिरानी की फिल्मों को ऑडियंस यूनानिमसली मासेस में पसंद करती है, बट सरप्राइजिंगली फिल्म बनाते वक्त उनकी सोच टोटली अपोजिट रहती है। तो मैं और अभिजात ने एक रूल बना के रखा है। What we've decided is that every time we make a film, Let's make the film only for ourselves. Let's not think about the audience. मैंने वेरी ऑनेस्टली कभी कमर्शियल एस्पेक्ट्स माइंड में रख के फिल्में बनाई नहीं। you know, actually you can never make a film for an audience. You have to make it for yourself. Because we cannot sit here and judge what the audience wants. It's very difficult to judge what the audience wants. मैंने कहा मैं जज करने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं जज करने की कोशिश करूँ तो वो इतना वेरिड है इन अ कंट्री लाइक इंडिया, लिटरेसी लेवल्स इतने डिफरेंट है। हमारा देश ऐसा जहाँ लिटरेसी लेवल आप देखिए कहाँ से जाता है। Going from 0 to 100, the audience is so varied across the planet that we will start thinking, okay, देखिए ये इमोशन है, ये शायद बिहार में बहुत ज्यादा चलेगा। out in Australia somebody likes that. Somebody in New York wants something different. जो शायद महाराष्ट्र में अच्छा लगता है वो बिहार में शायद ऑडियंस को अच्छा ना लगे। उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या अच्छा लगता है, वो जो बिहार में रहता है उसे क्या अच्छा लगता है। What you like might be very different from what he likes. How do you shoot? You're sitting on the sets and say, yeah, I don't like it. Maybe that guy in Bihar will like it. So let me shoot it for him. Let me do this song for him. So the moment you start putting in a film ingredients to please a different audience, तो शायद एक मिशमैश सी एक फिल्म बनेगी। you are assured of a mishmash. The moment you start saying, okay, let's do it for somebody else, you're trying to judge what they like. मुझे लगता है सिनेमा का कोई भी ऐसी क्रिएटिव आर्टिस्ट को एनालाइज नहीं किया जा सकता है। We really can't judge what somebody is wanting. How can you judge? How can you club everybody and say, oh, this is what? How can you think for somebody else? So the best way to probably make a film is कि see आपको क्या अच्छा लगता है. What we can judge is what you want. आप ये कह सकते हैं कि यार मुझे ही अच्छा लगता है। To make a film which you like, And then just hope कि आप भी तो ऑडियंस है. क्योंकि आप भी तो ऑडियंस है। क्योंकि हम भी तो ऑडियंस हैं। सही बात है। You also living in the same time frame. You also affecting by the same socio-political issues at the same time. So invariably when we write, we are laughing at the jokes, we are crying at the jokes. कहानी देखते वक्त हंसी आती है, इमोशनल सीन्स पर रोना आता है, तो आई थिंक आप शायद कुछ सही कर रहे हैं. If you feel we are reacting in a nice way to the film, let's go and make that film.
तो मुझे लगता है कि कहानी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही बनानी चाहिए और किसी के लिए। ये सोच के लिखता हूँ कि यार मुझे अपने लिए फिल्म लिखनी है और मुझे अगर मजा आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी मजा आएगा. Always want to make the film for ourselves and not for anybody. We are the audience ourselves. I think that's one mantra I want to say. Make the film only for yourself because you also an audience. You have to do what you like to do. और उसमें उम्मीद करनी चाहिए कि आप बना रहे हैं शायद आप दूसरों को भी अच्छी लगे. So at least when you do a film for yourself, even if the world doesn't like it, there'll be one person who likes it. That's yourself. बट ये बात बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं लगती है कि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली फिल्में उसी ऑडियंस से निकली हैं. I think stories come from life. Most stories come from people and they have the most exciting stories. See, how do you write film? When you write, you are writing from your collective memory. You meet different kind of people and everybody will have a story. Everybody will have an anecdote. So the moment you pick from real life, there's a whole reservoir of ideas. Actually, everybody has this reservoir, but we have to train our minds to pick from real life. That's exactly what comes out in your scripts. They've been modified. They've been changed. And when you modify those things, they become scenes which are not seen before. अब लाइफ में आपका करियर शुरू हो गया तो आपके एक्सपीरियंसेस कम हो जाते हैं, बहुत लिमिटेड रहते हैं. इनफैक्ट मैं अभिजात से ये कहता रहता हूँ कि ये पिटारा किसी दिन खत्म होने लगेगा. अब हमको सफर करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, और लोगों से मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए इंटरेस्टिंग लोगों से ताकि वो रिफिल होता रहे. जैसे मुन्ना को सर्किट और संजू को कमली की ज़रूरत है, वैसे ही इतनी वेल रिटन फिल्में लिखने के लिए राजू हिरानी को अभिजात जोशी की ज़रूरत है. अभिजात लाइक अ ब्रदर, लाइक नहीं इज अ ब्रदर. सिर्फ वो नागपुर में पैदा नहीं हुआ. अभिजात ऑटोबाइन यूनिवर्सिटी में ओहायो में प्ले राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म मेकिंग पढ़ाते हैं. I had never actually thought that I'll be able to work so nicely with somebody else. I always thought that writing is a more secluded exercise. You do it on your own. मैं सोचता था कि मैं टास्क मास्टर हूँ, मैं इतने घंटे काम कर सकता हूँ और जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ मैं करता रहता हूँ. ये मेरे को बाप मिला. Now I don't think I can work alone. बट उनका मिलना भी इनडायरेक्ट था. ये तब की बात है जब अभिजात जोशी को विधु विनोद चोपड़ा ने एज अ डायलॉग राइटर अप्रोच किया था करीब फिल्म के लिए. ये वही फिल्म है जिसमें संजय लीला भंसाली एज एन असिस्टेंट थे. Abhijat, you tell that story, yaar, how we met. Yeah, he saw my play in Birmingham and he left a card with the cast. So when I came to Mumbai, I met him and it was because of the play that I'd seen Khamosh and Parinda, and the first day he met me, he told me that I see some talent there. He told me first of all that I should be working with Tom Stoppard, but since I don't have Tom Stoppard, for now you'll do. So that was how he started. फिर राजू हिरानी लगे रहो का आइडिया लेके विधु विनोद चोपड़ा के पास आए. तो जब लगे रहो का हमारा बेसिक आइडिया क्रैक हुआ था एक, तो मैं विनोद को नरेट करने के उसके घर गया था. And Abhijat was there. When I got a chance to meet Raju for the first time, I was already a huge fan of Munna Bhai MBBS. Because I remember clapping in my living room when I saw the film. And Abhijat, of course, I've seen him many times. तो मैं विनोद के कभी जाता रहता था, अभिजात से मुलाकात होती रहती थी, देखता था मैं इनको यहाँ पे है. In your house and Mission Kashmir, even earlier Karim plays, and I knew him, but I never really sat down and chatted. He said कि मैं भी बैठ सकता हूँ, मैं भी सुन सकता हूँ. मैं भी सुन लूँ क्या? मैंने कहा बैठ जाओ. तो मैंने कहा सुन लो. तो हमने वो आइडिया उस टाइम नरेट किया विनोद को. And he heard whatever that first draft. Lage Raho ka whatever the draft was. He said, "Yaar, I want to work on this. Can I write this film?" And my instant reaction was, Abhijat stays in America. How can he? अब मैंने मन में कहा यार ये अमेरिका में रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये कैसे काम करेंगे? तो I asked him कैसे काम करोगे? तो कहता नहीं मैं वहाँ से आपको रोज सीन भेजूंगा. मैंने कहा यार दूर है. और क्योंकि इसमें गांधी की बात थी, ये अहमदाबाद में पीस ग्रोना पे अहमदाबाद, इन्होंने कहा यार ये तो जी सर मैं अहमदाबाद में रह चुका हूँ गांधी को लेके और मुझे बड़ा अच्छा लगता है. I've read about Mahatma Gandhi and this is something very close to me. तो मैंने आउट ऑफ पोलाइटनेस मैंने कहा ठीक है ओके. Yeah, okay. और ये उसी रात को you flying out that night, उसी रात को गया, उसने शाम को सुना स्क्रिप्ट, रात को चला गया. तो ये चले गए. And then I got this opportunity of working with him, and there was no guarantee that I would be able to continue to work with him or not. But I got a glimmer of hope that this might happen because Gujarati is my mother tongue. And 2 दिन के बाद मुझे एक ईमेल आता है जिसमें इन्होंने एक सीन लिख के भेजा. Which I joke with him now. It was a very bad scene. बहुत ही खराब सीन था. बहुत खराब सीन. बहुत ही खराब सीन लिखे हुए. Which scene was it? So it was the scene of the old people's introduction. So I tried to come up with a scene like that. The kind of scene that I'd liked in Munna Bhai MBBS. तो मैंने पोलाइट उसका एक रिप्लाई दिया ऑलमोस्ट सेइंग कि यार that ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं खराब है पर it's no good. I mean it in very nice language, but it was जवाब दिया कि ठीक है करके. I thought I'll push him away. She's smart enough to understand. समझ लिया. Same night he wrote another scene, he modified it or something else and sent it to me, and which was outstanding. Absolutely mind-blowing. Which actually didn't stay in the film for whatever reasons. But the thought of that scene stayed. लगे रहो मुन्ना भाई जब एंड होती है फिल्म, उसमें गांधी जी स्क्रीन पे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं. Bullets can kill me, but they can't kill my thoughts. My thoughts will keep coming every century and keep bothering you. Ideas exist. So bullets cannot kill ideas.
So that thought stayed in the film. तो हमने लिटरली शुरू किया. Almost for a month we started working on emails. तो बड़ा फनी होता था. ये कुछ वर्क करता था वहाँ सीन मुझे भेज देता था. मैं उस समय सुबह उठ रहा होता था तो मेरे लैपटॉप पे सीन रहता था. He'll write something and send something morning. I'll run through it. I'll do my changes and send him back. And फिर मैं उसको बोलता था यार ये इसको ऐसा करते हैं. वो भेज देता था. तो ये उस समय उठ रहा होता था. I would call him and फिर हम फोन पे बात करते थे 1 घंटा. Jam for an hour. एक महीना हम लोगों ने ऐसे काम किया. फिर मैंने से कहा कि यार ये कुछ हो रहा है मैजिक. And some magic happened. Some connect happened. मैंने कहा यार 10 days if you can come. तो साथ में फिजिकली जब साथ में मिलेंगे तो बेटर हो जाएगा. तो 10 दिन के लिए इंडिया आ जा. If you can come for 10 days, हम लोग शहर से बाहर चले जाएंगे, कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे. डेडिकेटेड 10 दिन काम करेंगे, ये पिक्चर कुछ और बन जाएगी. So he came for 10 days. छुट्टी लेके कॉलेज से. और मैंने वो 10 days का मैं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता था. तो मैंने कहा यार इसको अभी घर पे बैठेंगे, शहर में लेके आएंगे तो ये वेस्ट होगा टाइम. मैंने इसको एयरपोर्ट से पिकअप किया और मैं इसको एयरपोर्ट से उठा के सीधा straight took him to Mud Island from there. And 10 days we work like. और 10 दिन तक हमने पागलों जैसे 16 hours 17 hours a day रात बैठे रहते थे और पहली बार एक दूसरे को समझ रहे थे. बहुत मजा आ रहा था. अपनी कुछ लाइफ की स्टोरीज बताता था, मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताता था, उसमें से कहानियां बन रही थी. डे नाइट काम किया. 10वें दिन में उसको वहां से लेके एयरपोर्ट छोड़ा है. और 10 दिन के बाद मैंने वहां से स्ट्रेट आई टुक हिम टू द एयरपोर्ट एंड ही वेंट बैक. You were captive. So he didn't even step into the city at all. तो कुछ हमारी उसके बाद ट्यूनिंग हो गई. 2 months later, Raju came to the US. There's a lovely street जहाँ पे हम बैठते थे. वो एक आमिश फर्नीचर शॉप और उसके बाहर बैठ के हम रिकॉर्डर्स लेके बैठते. जब शॉप बंद हो जाती थी उनका फर्नीचर बाहर रहता था. तो शाम को 6 बजे 7 बजे हम वहाँ बैठ जाते थे और 7 से 12 बात करते थे वहाँ पे. और मेरे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड करते थे. वो आते जाते रहते तो उनको अजीब लगता था कि ये 2 लोग बैठे हैं 5 घंटे रिकॉर्डर्स लेके. कभी पुलिस ऐसे पास करके जाती थी कि In that trip, I think we realized that we had lived very similar lives. जिस माहौल में से आए, मैं एक छोटे शहर से नागपुर से आया, ये अहमदाबाद से आए. Both had grown in small towns. We had similar interests. We went to similar colleges. The same kind of fun we had in college. So we were on the same page. Actually, to find a writing partner who thinks alike is a gift. क्योंकि वो नहीं हो तो एक ही फिल्म को 2 लोग अलग ढंग से सोच सकते हैं. एक के जहन में कुछ कहानी चल रही है, दूसरे के जहन में कुछ. दोनों अपनी जगह पे सही है, मगर कहानी अलग देख रहे हैं. तो आई थिंक एक फॉर्चुनेट बात है कि हम लोग एक जैसा सोचते हैं. We're just talking, chatting, and something will trigger something. Some ideas will come up and some magic happens. And it was beautiful. And I realized that it was almost like finding someone who completely I could trust with the work that I was doing, where I felt like there was no problem. You know, it was unbelievable. So as I remember it, I'm getting emotional now. I'm sure. हम तो सुन रहे हैं पहली बार, उसमें emotions जाग रहे हैं. And I have to say, I have never come across anybody like him. और इस तरह राइटिंग की दुनिया को उसके मुन्ना और सर्किट मिल गए. भले ही राजू हिरानी और अभिजात जोशी के आइडियाज हमेशा ना मैच हो, पर फिर भी इनके रास्ते कभी अलग नहीं होते. अभिजात is a great guy to work with. तो मुझे एक दिन भी नहीं याद कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो. Sometimes I start feeling very strongly about something. कुछ अगर अभिजात लिखते हैं जो मुझे लगता है यार ये ठीक नहीं है, तो अभिजात कभी he'll never try and sell it. मैं ये नहीं कहता कि नहीं ये सीन ठीक है, अब इसी को शूट करो, ये तो मैं कह ही नहीं सकता. So he will try to understand my mind. Why is he? He'll try and read my mind कि इसको क्यों अच्छी नहीं लग रही है. He says कि यार he is the guy who has to go on the sets and shoot it. तो अगर इसका माइंड में इसको अच्छी नहीं लग रही तो शूट नहीं कर पाएगा. तो let me understand his mind. उनको जाके 300 लोगों के साथ ये सीन को लाइफ देनी है, तो वो तो फिजूल है वो आर्गुमेंट करना. और so he doesn't spend his energy defending the scene. He'll spend his energy rewriting it. लेकिन मुझे बहुत कुछ ठीक लगे तो मैं ऑप्शंस देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता रहता हूँ कि मुझे अभी भी ये ठीक लग रहा है. And he actually tries to understand as to why I feel strongly about it, and then he cracks it as to what is it about that scene which he doesn't like. But that very rare. I think probably in 2 or 3% of the scenes that might happen. Other 95% of the scenes we are on the same page. So the effort is always to understand each other. राजू हिरानी और अभिजात जोशी का राइटिंग प्रोसेस एक थॉट फोल्डर से शुरू होता है. For the first 8 weeks, 10 weeks, there is no plot or not even a character. What we do most of the time when we write a script, whatever thought comes in, we put it in a thought folder. Raju calls it the thought folder. मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस ऐसा हुआ था. तो हम अपने एक्सपीरियंसेस में डिग करते हैं, अपने लाइफ के जो ट्रिगर्स उसमें से लेते हैं, उसमें से निकाल के हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं. We collect ideas around the theme which we want to say, and then we just keep gathering things. जरूरी नहीं कि जो हमने एक्सप्लेन किया उसमें से कुछ निकलता है, उसमें से एक सीन बन जाता है. So we dump everything in that and keep reading that, and then a point comes when we feel sure about an idea, and then we try and force fit those ideas. Is another word. Force fit is another word into every scene. पर कभी-कभी इस थॉट फोल्डर की हेरा फेरी भी हो जाती है.
So whenever writing the next film, sometimes I revisit my earlier thought folders to see if there's some interesting thought. So there are lots of times actually scenes from which were supposed to be in the earlier film have flown into the next film. Because Abhijat was doing tremendous amount of reading on Mahatma Gandhi, he would update me that this is what he used to do. So he had said that Gandhiji, since he had a very packed schedule every day, so he had given instructions to his people that all unproductive work like cutting off his nails or shaving him should be done while he's sleeping, while he has having his power nap. So that's a trait, if you remember 3 Idiots, we gave it to actually Boman Hirani in the film. So it's something from somewhere else which kind of crept in here in a very different way. राजू हिरानी और अभिजात जोशी के राइटिंग में बहुत से गोल्डन रूल्स हैं. उनमें से एक है LCD. Yeah, LCD is a principle which Abhijat and me have kind of devised for our own writing. Whatever we write, we have to make sure that every scene should have either of LCD. Either it should make you laugh, it should make you cry, or it should be dramatic enough. ये तीन में से एक ना हो, ऐसा सीन हमारी फिल्म में हम नहीं रखते. If it's not there, that scene should not be in the film. It's a craft. It's not easy to do it all the time. You have to give a lot of information, but we constantly say, let's do LCD. Within every scene, try and actually create laugh, cry, or drama. तो हम हर सीन को एक यूनिक अंदाज से पेश करने की कोशिश करते हैं. तो ये बाय एंड लार्ज ये प्रोसेस है. ये टेक्निक कितना बढ़िया रिजल्ट दे सकती है, ये जानने के लिए 3 Idiots का एग्जांपल लेते हैं. If you all remember 3 Idiots, originally when it written, the first scene of the film, when on paper it was written, so when we had done the first draft, Madhavan, we had written that he's sleeping in his house and he gets a phone call. I remember we had shown the other person in the first draft. We see the guy who's making that call, Chatur, who's in the film, and he says, you know what, I found Rancho. The friend you loved, who was your buddy, and I found him. You want to meet him? Come to me. And he says, okay, I'm coming to meet. Gets up, goes to his friend, and both of them walk up to the water tank. On paper, this was it. In subsequent draft, we realized our mistakes, so we took that information away. Now we wanted to make Rancho very, very important. And I also have to say it dramatically. So the same scene, visually we modified, we put the whole scene into a plane. So he's in the plane, there's just a phone call which happens. We don't reveal the content of the phone call. So as a viewer, I don't know what phone call has happened. Something happens after the phone call, Madhavan becomes very tense. So as a viewer, I get a little hook, what's happening, what was that phone call about? He gets up, he gets a heart attack, he falls down. The aircraft has to make an emergency landing, he comes out. As an audience, I'm hooked. And then he opens his eyes and then you realize he faked the heart attack. And you realize he's fooled it, there's no heart attack. And just because of the one phone call, he brings the plane down. He fakes a heart attack and he brings the plane down. He skimmed out. He's actually brought a plane down and he runs and catches a cab. So automatically I'm more interested now, Sandy. How can he bring the plane down? Who's this person? Then he calls up his friend. He says, you know what? This guy's found Rancho. Sharman doesn't say anything. He gets up from his bed. He leaves his house. He doesn't even wear his pants. So for me, Rancho is suddenly skyrocketed up there. I've not yet seen Rancho, but Rancho subconsciously becomes a very important person in my head. So there's more curiosity to know, okay, who the hell is he? What is happening? Who is this guy for whom this guy can bring a plane down? I said, oh, who is this Rancho in their life for which this guy could bring a plane down? So that's a device to keep the audience engaged. If you give away everything in this thing, then why will I have to proceed ahead? Otherwise, I have to say Rancho was an exceptional man who, changed the lives of these two people in dialogues, and they'll be boring. ऐसे ही 3 Idiots का एक और सीन राजू हिरानी ने LCD के थ्रू चेंज किया. In the first or in whatever the last draft before we went on the shoot, the scene where Lobo dies was actually that he used to take some sleeping pills. And the way he was discovered was in the script it was said that Rancho used to always feel कि तू सोता नहीं यार, तू पागल हो रहा है, तू सो जाएगा, rest out and things will work out for you, your experiment will happen. So he used to always tell him you sleep at night. Then one morning he goes there and he sees him sleeping. So he's happy that he's sleeping, but before leaving the room he suddenly used to see a bottle and that bottle was of sleeping pills, and then he discovers that he's killed himself. Now this was on the script. I think literally 2 weeks before the shoot, I remember Dia had called me up, Dia Mirza, she called me up and she was aware that I was doing this film and she had read the script. So she sent me an article that some IIT students have created a drone. Now drone is very common now, those days nobody knew about a drone. So it's a device on which there's a camera and through the camera you can see. And I was looking for some new inventions like this to show in the end of the film when they reach Rancho school. But I found this very interesting. So I called those guys, they came to the office, they actually demonstrated the whole drone. And at that moment, that idea came that what if this was his assignment which he wanted to give it to the dean. He's unable to make it in time and these 3 friends make it. And when they want to show him that his experiment has succeeded, through the same experiment, through the camera of that same thing, they see that he's dead. So it just makes it more dynamic, more exciting. So this is what when I mean by LCD is the idea is to always create more and more believable drama. Take a small scene, try and dramatize it. More and more believable drama, more and more believable emotion or laughter. Or make sure there's laughter or make sure there's a tear. You always want to know the end. So as they say, always start with the end, then go backwards.
एड वर्ड से मिली टेक्निक्स भी राजू हिरानी की फिल्मों की राइटिंग एनहांस करती हैं। जैसे एड वर्ड में एक टेक्निक है ईथोस, पैथोस और लोगोस की। कहीं ना कहीं ये रूल राजू हिरानी ने शायद अपनी फिल्मों में भी अप्लाई किया। ईथोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कैरेक्टर या क्रेडिबिलिटी। ईथोस के थ्रू ऑडियंस को ये ट्रस्ट कराया जाता है कि जो लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो भरोसेमंद और ट्रस्टवर्दी लोग हैं। ये यूजुअली प्रोडक्ट को पब्लिक फिगर्स और सेलिब्रिटीज से एंडोर्स करा के अचीव किया जाता है। राजू हिरानी भी अपनी फिल्मों की क्रेडिबिलिटी स्टार्स को कास्ट करके बढ़ा देते हैं। इससे ऑलरेडी रिलीज के पहले ऑडियंस के दिमाग में ट्रस्ट आ जाता है कि अगर आमिर, रणबीर या संजय की फिल्म होगी तो अच्छी ही होगी। वो अलग बात है कि ओवर द टाइम अब ये चीज राजू हिरानी के लिए भी कही जाती है। पैथोस का मतलब होता है इमोशन। पैथोस के थ्रू ऑडियंस के अंदर इमोशंस जगा के प्रोडक्ट को बेचा जाता है। जैसे ऑडियंस को पता है कि फेविकोल का जोड़ सचमुच में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, इसलिए राजू हिरानी अपने पॉइंट को एग्जैजरेट करके एक फनी इमोशन क्रैक करते हैं जिससे हवा में ही सही बट फेविकोल की एक ब्रांड इमेज बन जाती है। मच लाइक जैसे हमें मालूम है कि रजनीकांत रियल में इतने गुंडों से ऐसे स्टाइल में तो नहीं लड़ पाएंगे, बट फिर भी थ्रू एग्जैजरेशन हम हवे में ही सही उनकी ब्रांड वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं। राजू हिरानी अपनी फिल्मों में भी अलग अलग पैथोस यानी इमोशंस के थ्रू स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, लव स्टोरी, फादर सन बॉन्ड या फिर तीनों। लोगोस का मतलब होता है लॉजिक यानी रीजन। लोगोस के थ्रू ऑडियंस को लॉजिक या फैक्ट्स प्रेजेंट करके प्रोडक्ट बेचा जाता है। जैसे वो डेंटिस्ट वाला ऐड जिसमें एक डेंटिस्ट हमेशा पलटी मार लेता है। उनकी फिल्मों में भी लॉजिक को हेविली यूज़ किया जाता है कैरेक्टर का पॉइंट प्रूफ करने के लिए, चाहे वो चतुर की स्पीच हो या डिलीवरी सीन। ही ऑलवेज मेक्स श्योर कि कोई भी सीन बिना लॉजिक के ना हो। एक तरीका था, बहुत सिंपल तरीका था कि रैंचो जाके उसकी पूरी स्पीच बदल देता है, पर हमको लग रहा था बड़ा कन्वीनियंट वे है कोई भी जाके। हमने कहा मजा तब आएगा कि उसकी स्पीच अगर वो नॉर्मली पढ़े मगर सिर्फ उसका एक वर्ड चेंज होना चाहिए और जिससे पूरा मीनिंग चेंज होना चाहिए, बिकॉज उतना ही उसको टाइम मिलेगा कंप्यूटर में जाने का लॉजिकली। तो वो वर्ड नहीं मिल रहा था, बहुत महीनों तक वो वर्ड खोजते रहे, फिर वो रास्ते में चमत्कार और बलात्कार वो क्रैक हुआ। Here also the attempt was to make it real. That's why we researched so much on it. So everything, when he cuts that little camera pump and he puts that vacuum, this thing, everything is technically correct. We sat with a bunch of gynecologists, actually a bunch of people who, especially one gynecologist who she wrote the scene with us. So what we've shown is completely technically possible. एड फिल्म्स और फीचर फिल्म्स डायरेक्ट करने में राजू हिरानी को एक मेजर डिफरेंस नजर आता है। It's storytelling, both the cases, but I think the primary difference is that in an ad film you're trying to sell a product. If you're honestly trying to make an ad film, you have to be sure that ultimately the product should sell and it's not about storytelling. Sometimes you can tell a great story, there might be a great story, but it's not connected with the product. Somebody will say, did you see that ad? They don't even remember what the product was. So you have to make sure that you create some kind of a liking for the product, desire for the product, so that people eventually go out and buy that product. In a feature film, obviously you're telling a story. You want the audience to go through an emotional journey when they see the story. You're not really selling a product, you're selling the whole film. And you're not selling a film. And if you're passionately making a film, you're saying, okay, I love this story, I want the whole world to enjoy this story. That's the reason you're going out and making a film. But with ad films, you have to be very sure that the product is integrated with the story, that it creates a desire to consume that product. एडवर्टाइजिंग में जिंगल्स का भी यूज़ किया जाता है ताकि ऑडियंस के दिमाग में प्रोडक्ट का इंप्रेशन बना रहे। ऐसे टैगलाइंस या कैच फ्रेजेस राजू हिरानी अपनी फिल्मों में भी लिखते हैं ताकि उनके थॉट्स और मैसेजेस का इंप्रेशन सिर्फ कुछ वर्ड्स में सम अप होके बाहर आ जाए। गांधीगिरी, ऑल इज वेल, रॉन्ग नंबर, इन वर्ड्स को सुनते ही हमें फिल्म में बताए गए लंबे चौड़े आइडियाज़ एक मोमेंट में याद आ जाते हैं। एड्स में एक और चीज़ काफ़ी कॉमन होती है और वो है जल्दी जल्दी इमोशंस बदलना। क्योंकि हर एडवर्टाइजमेंट की एवरेज लेंथ ऑलमोस्ट 30-40 सेकेंड होती है, इसलिए इमोशंस फील कराने के लिए कैरेक्टर्स को अचानक से खुश, दुखी या गुस्सा दिखाना पड़ता है, यानी बहुत क्विकली इमोशंस स्विच करने पड़ते हैं। ये हम राजू हिरानी की फिल्मों में भी नोटिस कर सकते हैं, जहाँ लाफ, क्राई और ड्रामा जैसे इमोशंस हर सीन में बदलते रहते हैं। इसके साथ साथ राजू हिरानी का डायरेक्शन स्टाइल भी एड फिल्म्स की वजह से अफेक्ट हुआ है। I guess what came in handy was because we had to tell a story in 30 seconds, one was constantly taking very precise shots, trying to say it in precise words, minimal words. I still cannot do a pan in a film. You come from this one place to show another place. Everybody on the set laughs at me. He says he will never show this, he will cut from here to there, so he'll eliminate the pan. So I guess this whole way of trying to show things very quickly has seeped in, which sometimes I have to hold myself back also. I said, am I going too quick? So sometimes I look back at my films and I say, oh God, I've gone too quick there and I could have eased it out, I could have played with music. But given a choice between going fast and dragging it, I think going fast is a better option.
इस वीडियो में तो हमने सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स देखे। आने वाले वीडियो में हम राजू हिरानी की फिल्म मेकिंग के बाकी एस्पेक्ट्स को एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए तुम लोग राजू हिरानी का जादू देखो। I'm going to try. I'm not sure if I'm going to succeed. I'll need your energies. Help me with your energies.